Hello, JNVNM student. How are you? Hello, JNV Rachel. Hello, Jyoti. How are you guys? So, if the screen is visible to you and I'm audible to you, good evening. Good evening, JNVNM. We will be starting in 2 to 3 minutes. Huh? Let the others to be joined. Hello, JNV Nellore students. How are you? पढ़ाई हो रही है अच्छे से? I am fine, thank you. JNV रामनगर में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है? If anyone know? Okay. So let's just get started. So good evening, students. I welcome you all in this session of electrostatics. So today we are going to revise as we have promised that after every 2 to 3 classes, we will be having a revision session and also a question discussion session. Okay. So today is the day which is dedicated to revision and question basically. So the one who has not joined the previous classes will be get benefited by this class only because we are going to revise all the concepts and do some the fine questions. Okay. And for the regular student, this class is also very important because they will get a revised, they will get the revision that is very important for a preparation of any exam and also the question solving. So according to me, question solving improves your theory as well as the numerical solving capability. Okay. The more and more question you will solve, but solving question is not like the same question, but the data are changing. Okay. Suppose you are finding the force between two charged particle and each and every time you just change the what? You just change the magnitude of charge.
So these types of question will not help you to build the concept. But if you do 10 questions, but all the 10 questions are different from each other, then this will really going to enhance your mental capability and really deepen your thinking. ठीक है ना? So try to at least solve those questions which are different. ठीक है ना? Variety of question को solve करने की कोशिश करो. That is going to help you. ठीक है? सेम टाइप के क्वेश्चन अगर आप 100 क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, इट इज नॉट बेनिफिटियल बेनिफिट्स यू rather than उन 100 क्वेश्चन में there are 5 types of 5 varieties of questions are there. That is going to help. Okay. So it's not the quantity, it's about the quality of the question. Okay. So start करें फिर. I think everyone is here and yeah. देखो. And one thing that I want to discuss with you guys, that if you are finding any problems, like you are not understanding the concept, you want more numerical questions, okay? You want more tough and tough question, not the NCRT based question. You want tough questions from JEE Advanced and JEE Mains. So you have to tell me, okay? And you can tell me during the class also, okay? Like जैसे आज ये class finish हुई, then you will discuss with your classmates कि who want the more questions, who want more advanced questions, ठीक है? And if you find majority of the students will find that we need to add some more questions, PYQs and all, then in the next class you have to tell me. Okay? So for the next to next class, I'll prepare the same. Okay? Because if you are going to help me, then I am going to help you. Okay? It's a two-way process, not one. Got it? But whatever it is, our final aim to crack the upcoming examination that we have. Okay? So that is the single aim that we have. Now, first of all, in the revision part, we will take these charges and its property because we have started the chapter with this. So what is a charge? So first of all, who is going to tell me what is charge? Who is going to tell me what is charge? Any one of you, any guesses? Hmm? So charge is nothing but the property. It is the property of matter. ठीक है? कौन है property of matter? Charge. Got it? Who is the property of matter? Charge. Same as mass is the property of matter itself. Charge is also the property, which enables us to feel electromagnetic forces. Electromagnetic forces. Similar way, how do we feel gravity? So we feel gravity because of the mass that we have. Okay. Suppose if you don't have mass, you don't feel gravity. In the same way, if any charged particle is feeling the electromagnetic repulsion or attraction, it is feeling because of the charge present on it. ठीक है? If there is no charge, there is no attraction or repulsion at all. Got it? तो ये तो हो गया कि what is the charge, है ना? Now, what are the properties of charge? So there are 3 to 4 property that we have discussed in the very first class. The first property is that charge is charge is additive, additive in nature, है ना? Discuss किया था. Which means if there are multiple charges, then what is the net charge? So Q net here, if I take this as a system,
So what is the Q net? Q net will be Q1 plus Q2 plus Q3 minus Q4. So you have to add the charge with their sign. Okay? Whatever the sign of a charge is, you have to add according to that. Second thing, you can also add that charge is scalar. This is the extra point you can remember. Charge is scalar. Got it? Now, types of charges. We have two types of charge, positive and negative. Hmm? Another point you can add that like charge repel and opposite charge attract. Okay? Which means if there is a positive and positive charge, which means we having the same charge, so same charge will attract. If we have positive negative, then it will attract to each other. Okay? Got it? Because they are opposite in nature. Okay, I'll change the color. No problem. So I have to write it down again. I'm speaking also, na, so you can take notes also. Okay, na? Now, I think this ink is visible to you. So like charge repels and opposite charge attracts. Sorry. So, अच्छा, this color is not visible. Font color की बात कर रहे हो? Font color is, the heading is charge and its property. ठीक है? ये heading. Got it? Now, third point you can take from the charge itself. That charge is conservative. Charge is conservative. Means we cannot create the charge and we cannot destroy the charge. So only the transfer of charge is possible. ठीक है? Transfer only. And the most important, the charge is quantized. Quantized means we are only having the charge in a fixed numbers, which is given by Q is equals to N into E, where E is the minus 1.6 10 raised to the power minus 90 Coulomb. This is the smallest charge possible. This is also termed as unit charge. Okay. This N here is the integral multiple, integer or integral multiple, which means charge can only possible in these format: 1e, 2e, minus 2e, minus 5e, 4e. Means always this number should be integer. This charge is not possible like 4.5e, 2.3. So these are not possible. Okay. So which means that charge is quantized. Got it? Now, another thing that is really not that much relevant, but observing the pattern of JE, this can be put it as a MCQ. So I'm adding it for you. That mass is relativistic.
Now, what does that mean? Relativistic, but charge no. Charge is no. Okay. What does that mean? So suppose in theoretical physics and basically Newtonian physics, में, what we will study, we will take the speed whenever we are taking an object of mass m and it is moving with a speed itna, with velocity itna. So that speed is very, very less than with respect to the speed of light. Okay. But if speed of mass, speed of a system is nearly equals to speed of light or is the degree of speed of light, which means it is having a very high value. What is the speed of light? Anyone? JNV Nellore students, JNV Yanam, Raichur, Jyoti, Alfida. What is the speed of light? JNV Shimoga student is also here. Can anyone tell what is the speed of light? थोड़ा रैपिडली आंसर करोगे. ओके. या वेरी गुड. 3 इंटू, अरे सबको पता होना चाहिए ये, है ना. 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So if a system is moving with a velocity like 1 into 10 raised to the power 6, 2 into 10 raised to the power 7, so you can compare these velocities with respect to speed of light, है ना. If I'm talking about 10 meter per second, 4000 meter per second, is this comparable to this light, this speed? No. But if you will talk about the above written velocities of speed, these are comparable to the speed of light. So in that case, what will happen? It is observed that the mass is not fixed then. Mass is keep on increasing. If suppose a system है आपके पास small mass m का and it is moving with such a high velocity comparable to the speed of light, then the mass of the system will not remain constant, and which is given by m is equals to m naught 1 upon 1 minus v square upon c square. So you can easily guess this v by c is always less than 1. So this square root is also less than 1. And when we are dividing something with less than 1, the value m will be greater than m naught. But let's say this v is very less. So we can neglect this v with respect to this c. So this ratio will become 0. Then 1 minus 0 is 0. Sorry, 1 minus 0 is 1. Then m is equals to m. Okay? But only mass is showing this property. Suppose that particular system, which is having a mass m, moving with a speed of 2 into 10 raised to the power 8 meter per second, has a charge of 10 coulomb. So this charge will remain same. This charge will not affected by the speed. Okay? So that is important thing you can consider. Got it? तो मास रिलेटिविस्टिक होता है लेकिन चार्ज रिलेटिविस्टिक नहीं होता. Got it? And also one point very important, in the universe I am asking you two questions. In universe, first is number of charge particle, and second is total charge. So we know that charge is conserved, ठीक है ना.
तो आप लोग मुझे बताओ कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो कंजर्व्ड और नॉट, या टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड इन यूनिवर्स? बताओ। टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी कंजर्व्ड है? एवरीवन, is the number of charge particle is also conserved in the universe? Okay, JNV Anam student has answered. What about JNV? Okay, Raichur ने भी आंसर कर दिया, very good. What about you, JNV Shimoga, Alfida? देखो, if you are coming in the class ना, तो you have to respond. JNV Nellore is saying no. Why? Why the number of charge particle are not conserved? कोई आपके पास कोई valid reason है? Have the valid reason? और reason है, valid है नहीं, वो तो मैं बताऊं तुम. What about you, JNV Shimoga? Each time I have to take your name. JNV Shimoga student. Somehow you are correct. ठीक है, देखो, number of charge particle is not conserved, but total charge is conserved in universe. And why? Because जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, सॉरी, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, due to radioactivity decay, they get transfer into anti neutrino. ठीक है, proton can transfer into alpha particle, beta decay, gamma decay. So they are not fixed. ठीक है, अभी this is aluminium, let's say aluminium, now it is neutral, but suppose I am talking about Al plus 3. क्या आप भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है? नहीं, बट टोटल चार्ज इज फिक्स्ड. ठीक है ना? So that is why number of charge particle is not fixed, but total charge is remain conserved. ठीक है, so number of charge particle is not conserved, but the total charge is. I think charge we have covered completely and entirely. Now move to the Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law की हार्ट के बारे में बात करेंगे. What is Coulomb's law? So we have two charge particle Q1 and Q2 separated by a distance r. ये जो डिस्टेंस मेजर होती है सेंटर टू सेंटर होती है. ठीक है, due to symmetry of this spherical, because we consider the point charge to be spherical one, so due to symmetry we will consider that all the charge is concentrated on point. So that is why we can apply the Coulomb's law to this situation also. ठीक है ना? सिमेट्रिक बॉडीज पर ही Coulomb's law को आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज you can consider the symmetric bodies as point charges. This distance r that we always talking about in Coulomb's law, that they are separated by r, separated by r. This distance is the distance of center actually. ठीक है, but all the charge we consider at the center, so we can remove these spheres. ठीक है ना? This is q1, this is q2. So by observation it is find out that force experienced, again, force experienced is equals to k q1 q2 upon r square. It will depends on the product of the charges divided by the distance square. ठीक है, got it? This is the force experienced, which is also equals to force applied, but in what case? In case of vacuum. In case of vacuum. Got it? ठीक है, now if this system q1 and q2 is placed in some medium, is placed in some medium, so in that case force experienced will change, and it is equals to 1 upon 4 pi epsilon. This k को you can also write here 1 upon 4 pi epsilon naught.
epsilon naught is the permittivity of free space. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। सो फॉर एनी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, फॉर दिस मीडियम द फोर्स एक्सपीरियंस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r is same, charge is also same, but this permittivity will change, and this epsilon को we can write that this epsilon is equals to k times of permittivity of free space, ठीक है। सपोज जेएनवी यनम में 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, ठीक है ना। एक बहुत छोटा है, एक बहुत लंबा है, ठीक है। सो इफ द हाइट ऑफ दिस लिटिल स्टूडेंट, शॉर्ट स्टूडेंट, ठीक है, इज लेट्स से 3 फीट, ये वैसे काफी कम हो गया बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड द हाइट ऑफ दिस बिगर स्टूडेंट और द हाइट ऑफ दिस स्टूडेंट लेट्स से 6 फीट, सो वी कैन से ना कि हाइट ऑफ दिस स्टूडेंट बी, h of b is 2 times of h of a, कह सकते हैं ना। So similarly, if the permittivity of free space is epsilon naught, that is our reference. So we can say that each and every medium having a permittivity k times of epsilon naught, है ना? Got it? That is why we are writing it as like this. This epsilon is itself is termed as the relative permittivity. ठीक है? So we can say that if you put the value here, force experienced in a medium is 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 upon r square, ठीक है, which ultimately gives you that force experienced in a medium is get reduced by force experienced in vacuum divided by k, k टाइम्स रिड्यूस हो जाता है क्या, फोर्स हमारा, ठीक है ना। तो दिस इज द मीडियम, which means अगर हम किसी पर्टिकुलर मीडियम में we place the system of charges, the force experienced by each and every charge will get reduced by k times. And what is this k? K is the dielectric constant, dielectric constant, ठीक है। any kind of doubt? Few points I want to note here, that first is this is conservative force, कंजर्वेटिव फोर्स। इस स्टेटमेंट से ना, दिस ओनली स्टेटमेंट कंजर्वेटिव फोर्स होता है कूलम्स लॉ। एडवांस तक के क्वेश्चन भी फोड़ सकते हैं अपन, ठीक है ना। इज ओनली दिस सिंगल स्टेटमेंट एंड आई विल शो यू, ठीक है ना, एट द परफेक्ट टाइम। दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड क्या है, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर ही एक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन चूज करने में आसानी होती है, जस्ट मैच द सेंटर, ठीक है। अकर इन पेयर, अकर्स इन पेयर, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये यहीं मिला है, अकर्स इन पेयर। इफ q1 is applying the force on q2, q2 will also apply the force on q1 ना, सिंगल फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। गॉट इट नाउ। और क्या हो सकता है कूलम्स लॉ में, सपोज ये आपको सोल्व करना है। दिस इज अ पर्टिकुलर मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, here the two charges q1 and q2 which is separated by a distance of small r, and here the q1 and q2 which is placed in the vacuum and the distance is r dash, or let's say distance in vacuum is r and medium is r dash. Now can you find the equivalent distance so that, कि ये चार्जेस ऐसा फील हो कि ये वैक्यूम में ही रखे हैं, ठीक है।
व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस दैट कुड बी पॉसिबल? बताइए, एवरी वन ऑफ यू। द क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे है वैक्यूम, ठीक है? तो सपोज वैक्यूम में जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो 10 न्यूटन है, जब हमने इन्हें 5 मीटर पर रखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस? आर डैश की वैल्यू क्या हो, है ना? आप समझ में आए? सॉल्व इट एवरीवन, ट्राई टू सॉल्व इट। सो हियर द फोर्स इज Q1 Q2 upon R square 1 upon 4 pi epsilon naught, है ना? Q1 Q2 by R square. In this situation also force is F dash we will take कि 1 upon 4 pi epsilon naught की Q1 Q2 upon R square, ठीक है? Now if these forces are equal, so we can say that 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square equals to R dash square, ना? R dash square, sorry, R dash square equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Q1 Q2 Q1 Q2 cancel out. 1 upon 4 pi epsilon naught be cancel out. So we will have R square is equals to R dash into K. ठीक है? This is K. So R square dash into K. So we can say that R dash here is R upon root K. ठीक है? Which means to feel the same force in a particular medium, we have to make the charges very close to each other. ठीक है ना? Root k means this distance is decreasing, so put we need to decrease the distance in between the charge. And similarly, from the medium to, if you shift it from medium to vacuum, R is equals to R dash k, which means if हमें ये फोर्स जो मीडियम में लग रहा है सेम फोर्स एक्सपीरियंस कराना है वैक्यूम में, then we have to what? We have to increase the distance between them. And कितना distance increase करना पड़ेगा? K times. ठीक है? Now, force by the medium. So I have told you already. Suppose this is the particular medium in which Q1 and Q2 are present. So हमें पता है, we know that force experienced in a medium is force actual divided by K times, है ना? Which means ये जो फोर्स एक्सपीरियंस किया इसने, दैट एफ एक्सपीरियंस, ये नेट फोर्स है एंड इट इज समहाउ डिक्रीज्ड, प्रीवियस वन और दिस वन जेएनवी रायचूर प्रीवियस। देखो ये दो चार्जेस हैं वैक्यूम में रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस है इनके बीच में, ये दो चार्जेस हैं इनके बीच में आर डैश डिस्टेंस मैंने मानी है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है की, ठीक है? तो अगर दोनों मीडियम में सेम फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो डिस्टेंस का लेन देन हमें करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है। हमें पता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी एक्सपीरियंस में रख, सॉरी किसी मीडियम में रख के, तो वो फोर्स की वैल्यू के टाइम्स डिक्रीज होती है एक्चुअल फोर्स से। तो व्हाट वी हैव डिड, वी हैव इक्वेटेड द फोर्स, बिकॉज हमें फोर्स क्या सेम रखना है। तो जब हमने इक्वेट किया तो हमने पाया कि आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन रूट के, विच मीन्स अगर आपको सेम फोर्स फील करना है ना जो वैक्यूम में आप फील कर रहे थे,
और किसी मीडियम में भी सेम ही फोर्स एक्सपीरियंस करना है, तो आपको चार्जेस को क्लोज लाना पड़ेगा। ठीक है, विच इज प्रीटी मच अंडरस्टूड, क्योंकि ये के टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं आर डैश को कम करूंगा ना, आर बाई के, तब ये वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, व्हाट इट। अब अगर रिवर्स केस आप देख लो, मान लिया किसी मीडियम में दो चार्जेस जो हैं 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अब वैक्यूम में उतना ही फोर्स कितनी डिस्टेंस पर ये फील करेंगे, तो दैट डिस्टेंस शुड बी, जो भी डिस्टेंस है मीडियम में, मल्टीप्लाई कर दो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर मैं चार्ज को वैक्यूम में रख लूं, चाहे मैं किसमें रखूं, मीडियम में रखूं, जो फोर्स होगा वो दोनों सेम ही एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है ना। आई थिंक अब दिस इज क्लियर टू यू, जेएनवी राइशु। हाँ, तो हमें पता है कि जो मीडियम का फोर्स है ना, वो डिक्रीज करता है, कहीं कहीं ना कहीं एक्चुअल फोर्स को डिक्रीज कर रहा है। So this is the net force experienced by this charge one. This is the experienced, not applied, which means कि somehow medium ने इसे decrease किया. This is the force applied by medium in the opposite sense. हम किसी force को कैसे decrease कर सकते हैं, उसके opposite force लगा के, है ना। So we can say that the F net here is the F applied actual, let's say F1 plus F of medium. Now F net, F net is the force experience, जो फाइनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज F अपॉन के इक्वल्स टू F1 इज जो पहले था इन वैक्यूम। ठीक है, इसे हम F ही लिख सकते हैं, माइनस F ऑफ मीडियम। वाई माइनस? बिकॉज इट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज द वेक्टर सम, दिस इज द मैग्नीट्यूड सम, so we have to take the minus. Now force applied by the medium is equals to F into 1 minus 1 upon K. So this is the force applied by the medium. What is the value of this F? F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम, सो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से यू कैन गेट इट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सो सपोज देयर इज अ चार्ज। ठीक है, अब इसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आया, है ना, इसके पास कोई दूसरा चार्ज आया, एंड दोनों, दिस बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, so this will feel repulsive force in the radial direction. सपोज मैंने ये चार्ज हटा दिया यहां से, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ही मैं चार्ज ला रहा हूं तो फोर्स लग रहा है, विच मीन्स कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सो ये फोर्स कैसे लग रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट? कंसेप्ट ये है कि कोई भी पर्टिकुलर चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, दैट इज टर्म्ड आउट एज इलेक्ट्रिक फील्ड, which represents and which depends on the strength of the charge. ठीक है, and the point where we want to take the force. Now if I take another charge particle, so ये जो electric field है, now this electric field will apply the force on this charge particle, which is magnitude of this charge multiply by electric field of another charge. ठीक है ना, so force apply by capital Q is equals to small q into electric field of capital Q. ठीक है, so this is the electric field. It is also termed as force, electric force per unit charge. ठीक है ना, ये सिमिलर ऐसे ही हो गया, मान लिया यू हैव 10 ऑरेंजेस, 10 ऑरेंजेस का प्राइस है, मैंने पहले भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, 10 ऑरेंजेस का प्राइस है 150 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज?
Similarly, you have to divide it with it. It will be 15 rupees. Now, you know the value of price per unit. Per unit orange, you have to pay 15 rupees. So now, whatever the number of oranges are there, you can calculate the price. Suppose 1000 oranges का price आपको पता करना है. So it will be 15,000 rupees. Similarly, what we have taken here, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? K capital Q small q upon r square. Now, if I divide this expression by small q, it will become K capital Q upon r square. Now, this is the force per unit charge. And if this charge is unit charge, unit टेस्ट चार्ज, अगर मुझे यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए फोर्स पता लग गया, तो अब मैं किसी भी चार्ज पर फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना? क्लियर है? तो दिस इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज के, सॉरी, के क्यू आर स्क्वायर इंटू आर कैप. दिस इज फॉर द पॉइंट चार्ज. ठीक है? Suppose there are multiple charges present in the system. So what is the electric field? Electric field is E net is given by E of Q1, E of Q2 plus E of Q3. This is the vector sum plus E of Q4. ठीक है ना? Similar way में you can add the forces also. ठीक है? Now, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे. What is electric field lines? Electric field lines are it is the imaginary curves. Imaginary curves that help us to uh, identify direction of electric field at a point. किसी भी particular point पे what is the direction of electric field? Because if you know the direction of electric field, you can calculate the direction of, you can also guess the direction of force, because force की direction भी वही होगी जो electric field की होगी. And I would say it oppositely, that whatever the direction of the force have, same direction of the electric field भी. ठीक है? So suppose this is the electric field lines. So at this particular point P, I want to know what is the direction of force or what is the direction of electric field. So what you have to do, you have to draw a tangent on this point. So there are two directions. Now which one has to take? So it will be decided by the type of charge जिसकी वजह से ये field line create हुई. If it is positive, then this direction will be there. If it is negative, then this direction. So I am drawing it here that for point charge, electric field lines are radially outward. ठीक है ना? Radially outward. For negative charge, it is radially inward. और हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक अ क्लोज लूप. कभी भी ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाती हैं. ठीक है ना? गॉट इट? हाँ, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्शन में हेल्प करती है. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गिवन लाइक दिस, सो ये जो मोर क्राउडेड रीजन है ना, दिस विल बी हैविंग more strength, more strength
and this less denser area is having less strength, which means less is the density of the electric field lines, less is the strength of the electric field, less strength. Okay. Now suppose there is a plain sheet of charge. ठीक है, प्लेन शीट है चार्ज की, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बताओ। ऐसा दिखेगा ना ये लाइन चार्ज साइड से देखने पे, कैसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसी होंगी, ऐसी, यूनिफॉर्मली सेपरेटेड एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, 1-2 पॉइंट और एक और 2 पॉइंट और बता देता हूं इसमें, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर मेक क्लोज लूप। ठीक है, सेकेंड इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी क्रॉस भी नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि अगर मान लिया ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इन्होंने क्रॉस कर लिया, तो एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस एक्शन यहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, they have two direction, we have two direction of electric field, and at the same time दो direction of force is not possible for a single charge। ठीक है, that is why they never cross each other। ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन लाइक दिस, पैरेलल होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी, इनके बीच का जो स्पेस है वो भी फिक्स्ड होगा, एंड these are parallel to each other, this is termed as uniform electric field। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कैसी होंगी, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल लाइंस, और दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, सपोज किसी चार्ज Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है ना, और मैं इसमें स्मॉल Q नॉट चार्ज को लेकर के आ गया, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस Q नॉट। तो फोर्स कैसे लिखेंगे, इस चार्ज को लिखेंगे जो भी हम लेकर के आए हैं, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो ओरिजिनल चार्ज पहले से मौजूद, दिस इज द वे टू राइट द फोर्स। बताओ, ये थोड़ा यहाँ पे चलो मैं पढ़ दूंगा यहाँ। A charge Q is divided into two parts such that they experience maximum electrostatic repulsion when placed at a certain distance apart. Find the division। बताओ, बताओ भाई, बताओ, सोल्व करो, कैसे सोल्व करेंगे। सपोज मेरे पास, सपोज क्या ये गिवन है, कैपिटल क्यू चार्ज, मुझे इसे टू चार्जेस में ब्रेक करना है, Q1 एंड Q2। ठीक है, नाउ जो मेरा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज के Q1 Q2 अपॉन R square। Now we have to maximize this force, so for that, what is the ratio of this Q1 and Q2?
tell me what is the ratio of this Q1 and Q2, and I'm strictly giving you 1 minute to solve this question. ठीक है? I'm strictly giving you 1 minute to solve this question. Now try to solve this, all of you guys. JNV Bhavnagar student is also here. JNV Yanam, JNV Nellore, Alfida, and all of you are was present in the class. Try to solve it. ठीक है? हो जाएगा सभी से या नहीं? I'll start solving it. देखो, ये टू चार्ज पार्टिकल हमने मान लिए Q1 एंड Q2. सपोज Q1 का जो मैग्नीट्यूड है विच इज Q, ठीक है? सो Q2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कैन एनीवन गेस? कोई भी बताएगा? सपोज Q का मैग्नीट्यूड था 100, तो स्मॉल Q1 हमने मान लिया इज 40. सो Q2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अब तो बता दो, बताओ एवरीवन. यार एक तो ये बार बार मुझे पूछना पड़ता है ना. There are lots of students actually, and no one is answering. This is the simpler, the very simple mathematical expression it is. Huh? 60. Very good. तो 60 कैसे किया? 100 - 40. Similar way में I can write it as capital Q minus small q. Now the force here is K Q1 Q2 upon R square. K Q into capital Q minus small q divided by R square. Now this force is to be maximum for what division of the charge? So for that आपने 11th में सीखा ही है, किसी भी चीज को मिनिमम और मैक्सिमम करना है तो व्हाट वी कैन डू, वी विल टेक दैट फंक्शन, differentiate it and put it equals to 0. But here the distance is fixed. So what is the variable? Variable is the charge. ठीक है? क्योंकि हमें चार्ज का ही तो रेशियो निकालना है ना, तो चार्ज इज वेरिएबल हियर. So we will calculate df upon dq. Now this k and r square is constant, so we can take it out. Now it is q into capital Q minus small q. When you multiply it with it, d by dq, it will become q capital Q minus q square. Now this capital Q is also fixed. So it will become k upon r square d by dq, and it is differentiation of q will become 1. Only q will be remaining, minus differentiation of q square will become 2q, and which is equals to 0. This now capital Q minus 2q equals to 0. So capital Q is equals to 2 times of q. ठीक है? So if Q1 is q, then Q2 is also capital Q minus, put the value, small q here is capital Q by, and Q2 is also capital Q by. So Q1 and Q2 is just the half of the charges. ठीक है? Got it? Now move on to the next. Two particles having mass m and charge q, each are to be placed on a rough surface with a coefficient of static friction mu. Now what can be the minimum separation between them so that
दे रिमेन स्टेशनरी। बताओ। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन द क्लास इज ओवर। प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? जेएनवी एनएम स्टूडेंट, ज्योति, क्लास 12, अल्फिदा, जेएनवी रायचूर, अहमदनगर, भावनगर, शिमोगा, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अच्छा, तो जेएनवी रायचूर से ही डिफरेंशियल पार्ट। डिफरेंशिएशन में क्या होगा? कुछ भी नहीं है। देखो हमारे पास क्या था एक्सप्रेशन, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इसे ऐसे मानो ना, इट इज रिटन एज लाइक 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब कर दोगे? बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज वॉट? 3 माइनस 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n equals to n into x raised to the power n minus 1. Always remember. So here the power is 2. So 2 will come in front. N. Then x raised to the power n minus 1. 2 minus 1. Which automatically results in 1. Similarly, d by dq we are doing. Okay? We have to differentiate only small q terms. The capital Q is constant. Fixed है वो तो पहले से ही. तो capital Q, it is similar to 3x. Capital Q into small q. So only capital Q will be remaining here. Minus q square. 2 into q raised to the power 2 minus 1. Q minus 2q. And when we equate it to 0, then small q की वैल्यू मेरे पास आती है q by. And small q I have assumed as q1. And q2 is nothing but q minus small q. q minus q by 2 will also q by 2. अब क्लियर है? जेएनवी राइचूर अब क्लियर है? हम्म, ठीक है। अब ये बताओ ये बता दो, फटाफट बताओ। टू पार्टिकल है, मास एम के, चार्ज क्यू है, ईच आर टू बी प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस। तो सपोज दीज आर टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। व्हाट कैन बी द मिनिमम सेपरेशन? मिनिमम सेपरेशन कितनी होनी चाहिए सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी, मतलब मूव ना करे, रिपल रिपेल ना करे? सबसे पहली बात तो रिपेल करेंगे, सेम चार्ज है, ठीक है। इनका मास एम है, चार्ज स्मॉल क्यू, एम स्मॉल क्यू। रिपल्शन होगा तो दूर जाना चाहेंगे, ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स they want to move, but here the friction is also there, so when it try to move in this direction, friction will oppose it, and the same way friction will also oppose it. Now किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो, तो इस पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई लेट से डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ मिनिमम सेपरेशन क्या हो कि दिस चार्ज विल नॉट मूव, सो द फ्रिक्शन शुड बैलेंस दिस। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? म्यू इनटू एन, एंड दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सो इफ दिस चार्ज, this force is equal to the limiting value of friction, then we can say it is the minimum distance that we require to stop that, ठीक है। now mu into n, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन म्यू एन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन, गॉट इट। सो दिस फोर्स शुड बी, एफ सी बी क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन, सो दैट दे कैन नॉट मूव। सो द minimum value that fc can take is equal, otherwise all the values are less than, sorry, maximum value that fc can take is equal, otherwise all the values are less than mu n. So fc will be maximum when it is equals to mu n, and when it will be maximum, when d will be minimum.
जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना ज्यादा न्यूमरेटर, उतना ज्यादा ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी. So if d decrease, fc will increase. So if d decrease to the minimum value, f increases to the maximum value. ठीक है. So f maximum is nothing but kq square upon d minimum square equals to what? Mu into n. N is nothing but, n क्या है? N is the contact force. N is equals to mg. We all know that in 11th class that n is equals to mg. So mu into mg. So d minimum का वैल्यू क्या हो गया? K q square over mu mg equals to d minimum square. और d minimum मेरे पास क्या आ गया? K q square divided by mu mg स्क्वायर रूट. ठीक है, सभी को क्लियर है? एवरीवन, इट इज क्लियर टू ऑल? रेस्पॉन्स यार प्लीज. चलो इन्हें बाद में करेंगे. ओके, so I think this is clear to all. If anyone has any kind of doubt, you can ask. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive in the lecture and being responsive. Thank you so much, guys. Bye. Take care of yourself. Bye bye.